Hello everyone, Namaste. Welcome to your favorite channel, Profit Bhai. Today, as you can see, I have a guest, and with me I have Drashti Panchal. She has been one of our students earlier, and she's working in the similar field. So, Drashti, welcome to the show at Profit Bhai. Hello, sir. Hello, How sir. are you doing? How are you Good doing? evening. I am good, sir. How are you? Oh, I'm good. I'm good. How many years you've been working now, Drashti? I have been working for the past 5 years, Okay. but mainly I would emphasize on the past 3 years that I have been in this field of logistics. Logistics में आप काम करते हो. Before we get there, uh, you know, matlab the focus I already briefed you off the record that Mhm. there is a lot of student hassles going on in the country. पेपर लीक्स हो रहे हैं, इवन मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, पुलिस के, को जो भी एग्जाम होता है उसके पेपर लीक्स हो रहे हैं. टेल मी समथिंग, डिड यू एज अ स्टूडेंट जस्ट रिवाइंड 5 to 10 years बैक ऑफ योर लाइफ, आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो उसका पेपर लीक हुआ है क्या कभी? No, so like when I was like appearing for my exams, nothing like this has happened Nothing with like this. me. Yeah. No, And did you ever try for UPSC या any such competitive banking के भी exams होते हैं ना, banks के? no, Very good. no. I was never one of those students. अच्छा. Yeah. Okay. But any particular reason you always wanted to work what you're working right now? कि कैसा था आपका thought process as a student, कैसा था? No, it was like I never wanted specifically a government job or something because I've seen those people at in my building having a government job, having a very good salary, but having no personality at all. Right. Basically, yeah, I mean they have a very good salary, but the surrounding I guess they are into is very dull and boring. I personally feel that way. So I was not the one, and usually I'm not a person who chases after money or like not that into कि government job ही होना चाहिए या ऐसा. Hmm. I have been easy flow person. Sure. तो दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली कि सैलरी अच्छी है बट पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता, ग्रो नहीं होता. एंड गवर्नमेंट जॉब में एक ही चीज होती थी पहले, like in the earlier times, that there was a lot of safety and security. Job security was a big point. I'm sure in certain government jobs it's still there today. Yeah, But you never felt, you always wanted to work in a private setup where you get growth. yeah, yes. अच्छा. आपने बीबीआई किया है या बीएमएस किया है? व्हाट हैव यू? I've done business management, Businessman. Perfect. BMS. And are you applying for masters anywhere or what is it like? I uh, I had taken your guidance before Yeah, yeah, yeah. for my MBA, if you remember. Right, But right. then the situation such arise that I couldn't leave my job also, Hmm. and I also wanted to study. So I thought of doing this MBA from DY Patil, online MBA. I Okay. even got myself enrolled. I tried for a month, but Hmm. it did not work out for me because yeah, study pattern and everything was really not good enough for me. Okay, okay. Okay, fair enough. But you Yeah, continue with your work and it's been 5 years. So tell yeah. us something about your job profile. What is your daily work like? क्या करते हो आप? I my current position is senior customer service executive. So basically, my we are consolidators. We mainly deal with the cargo that is getting imported. So our main sectors are China, Far East, Europe, Gulf. We mainly get the cargo like there are particular shipment kind like for Italy there is tiles, marbles, and ceramics. Right. For China there are yeah there are particular players. How do I explain? For certain region there are certain commodities that get imported to India. Sure, So sure. my job is coordinate with the agents every day, check for the inquiries and see if the cargo is coming at the agent's warehouse on time and Okay. getting delivered and yeah, checking with the carrier also if there is any delay in the Hmm. routing or anything.
इंटरेस्टिंग. सो दैट्स अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, दिस इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यार दृष्टि ऑन योर शोल्डर्स. आई Yes, मीन. sir. I mean, it is not a 9 to 5 job because China opens earlier than us and it comes to an end by 3:30. Right. And while it comes to an end, Germany starts. Okay. So when Germany comes to an end, then Istanbul is there. So Oh. all these sectors, everything just so I have to constantly like be on my foot, or I Yeah. have to check my mails on the phone as well Oh if there's God. anything urgent. But still, you have stuck with the company. So the company must be really special, huh? Because after such a demanding profile, I yeah. Yeah, I mean, I joined this company when it was a startup company. So I was one of the first few employees who had Wow. begun there. Wonderful. Wonderful. Yes. So it's a kind of very special company to me. Yeah. They've I mean, also helped me grow because I had no knowledge about this field at all. yeah. So When you they join only the taught me. startup, eventually you become a part of a larger goal. I'm sure, I think I would love to Hmm. interact with your company owners, yeah, CEO, because it looks like, you've been my student, and the way I have seen you grow overall, it's very nice to hear what your company is doing. क्योंकि कल्चर बहुत मैटर करता है ना ऑफिस में. Yeah, कल्चर अच्छा होगा तो exactly. वर्क में आपको डिमांडिंग वर्क होते हुए भी आप आराम से हैप्पीली को एग्जिस्ट कर रहे हो. सो दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर यंगस्टर्स यार, बिकॉज पीपल टुडे जस्ट डोंट वांट टू वर्क, आई गेस. क्या लगता है आपको? I mean, they have this mindset. I feel like I know a few friends of mine हाँ who हाँ. are yet to find a job. Like they are still at home, dependent on their parents. ओह गॉड. Um, I feel like they have prioritized their mental health way too much that they don't want to pressurize themselves. या. I feel that way. I mean, you should step out to know how the outside world is. You cannot just sit in your comfort zone. It's going to eat your head any which way. Yeah, that's a great point. You are very sorted in life, huh? I was right. आप बहुत sorted हो, बहुत जल्दी, touch wood. Very early in life, you're very, very sorted. I'm actually enjoying this conversation because I don't know how many people in your age will think like that. इसीलिए मैं चाहता था कि आप हमारे यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल टाइप बनो, बिकॉज सी क्या होता है, अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन आवर स्टेट, इन महाराष्ट्र, मुंबई में मैंने देखा है. अभी आप ये पॉइंट देखो, हाँ, योर जनरेशन इज गोइंग टू इनहेरिट अ लॉट ऑफ वेल्थ. ओके, अभी हम लोग फाइनेंस पे आते हैं. जैसे Hmm. आपके पेरेंटल साइड और आपके पेटर्नल एज वेल एज मेटर्नल, दोनों साइड से आप ही को Hmm. मिलने वाला है. whatever it is. कम Correct. या ज्यादा की बात नहीं है, जो Hmm. भी है वो आपको मिलने वाला. दिस Yes. यूनिक थिंग नोबडी इज रियलाइजिंग कि पहले वाले जनरेशन में ये बेनिफिट इतना नहीं था, और उसके पहले वाले जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं था. लाइक आपके ग्रैंडफादर Hmm. ग्रैंडमदर के जनरेशन में आई डोंट थिंक दे इनहेरिटेड सो मच. कितना उन्होंने Yeah. इनहेरिट किया होगा आई एम नॉट श्योर, ज्यादा नहीं होगा, जो भी फॉर मोस्ट फैमिलीज. बट अभी Hmm. क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम अभी दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स अपने कंट्री में बढ़ गए हैं. People are spending more than ever Okay. on credit cards, which is okay. I But don't have one. oh, that's great. Oh, shit. I don't imagine My how. actually, my boss told me the same thing. I was like, so, Hmm. I am not. I want a credit card. What should I do? Huh. So my sir was like, don't get yourself into that credit card wala jamel. Yeah. Instead, if you genuinely like desperately want a credit card, Huh. go and get a personal loan. The interest is lower instead. Oh, okay. 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 And do you use But I never felt the need. Yeah, UPI? I should uninstall GPay from my phone because I Exactly. मैं spend it वही as if बोलने वाला था. as I yesterday only told mom that I should uninstall GPay because the way I use it, as if हाँ. they are going giving me money to use it. नहीं, the thing is, see, at least Drashti, I'm so happy I called you and we did this because at least you are realizing it. बहुत लोग ये realize नहीं करते हैं. आपको realize हो रहा है, that means you are very tough on your finances, which is great, which is the way it should be. Very much. Because आप self made Hmm. हो, आप खुद मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए एक एक रुपया important है शायद, है ना?
बट मैं वही Yeah. बोल रहा हूँ ना, अभी के ज्यादातर लोगों के पास क्या है, काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से उनको इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा मिलने वाला है। सो उनको पता है कि देखो घर मेरा रेडी है, सर्वाइवल का फाइट नहीं है, सो जॉब मैं चूज कर करके Hmm. कर सकता हूँ। और उसमें भी फिर ये Hmm. एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, सरकारी नौकरी वैसे ही प्रॉब्लम है, मिले नहीं मिले, लाइक। Yeah. बोलो बोलो, से यू वर सेइंग समथिंग। Actually, my younger sister, she was appearing for her CET. ओके। So she trying to pursue law. So she gave her papers, but the next, I believe, for some other course, the papers got leaked. So that is why her results got delayed for a month. That was a very frustrating situation for her. That because of ओके। their results their papers getting leaked few hours before the exam, her results got affected because they had to reappear for that exam. या एंड But it is a kind of इट्स अ hectic. डीमोटिवेटर। या इट्स अ Yeah. डीमोटिवेटर। लोग इतना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकते ना यार। सो you've been working for 5 years. Tell me something. You invest in mutual funds as well? My parents have invested in mutual funds. I am more into SIP. Okay. Basically, we have one good family. One auntie is there. She's into those investments, so she helps us guide whenever we Sure. need. She comes home, helps us and guides us for things. That's great, yeah. Let me guess one thing. This helper या auntie या जो भी आपके relative हैं, she must be also your person who gave you insurance policies. Am I right? Yes, yes. और गाइस ऑडियंस, ये मैंने दृष्टि से पहले नहीं पूछा है, दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ आवर फैमिलीज, कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई रिश्तेदार पहचान वाला इनवेरिएबली बिकम्स एन इंश्योरेंस पर्सन, एंड इंश्योरेंस Yeah, फिर that उसी is true. लोग। अभी आप इन्वेस्टमेंट्स भी देख लो, आप भरोसा है, वैसा ही कुछ हुआ होगा ना, Hmm. और ना सी। I mean, what happened was she did my LIC policy just on my birth date itself. So I have to every month, every year on my birthday, I have to pay that 10,000 for that LIC, which is very disappointing for me. Don't worry, my dear. I am with you. I am also in the same boat. और the worst part is this is not your policy. I'm sure आपके parents ने निकाली होगी आपके behalf पे. Please tell me No, that. No, this no, is you. that no. Charcha. The one that matures when the one that my parents had for myself हाँ. that matured when I was 21 years old. Very nice. Okay, okay. तो वो उसका हो गया खत्म. Uh, अभी this is your choice, which is good, which is very good. yeah. हाँ, या बर्थडे के दिन पे यूजुअली ये झटका लगता है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब काफी साल से हो रहा है, वही पॉलिसी चालू है। इट्स गुड, वी नीड वन Hmm. टर्म इंश्योरेंस फॉर श्योर इन आवर लाइफ्स। वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग रखते ही हैं वैसा, कि यार एक टर्म इंश्योरेंस जो Hmm. अर्निंग मेंबर है उसका होना ही चाहिए, है ना। That's it. Yeah. अच्छा ये बताओ, रिलेशनशिप्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, बिकॉज टुडे आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, एंड इट्स अ बिग Hmm. प्रॉब्लम दैट एक्चुअली इस पे भी कोई नजर नहीं दे रहा है, ये थोड़ा लाइफस्टाइल इशू है कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, द नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस इन मुंबई दिल्ली बॉम्बे दिल्ली में बढ़ Have रहे हैं, increased. बहुत बढ़ रहे हैं। Hmm. मतलब व्हेन आई से बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आई डोंट थिंक पीपल नीड ईच अदर, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट, which is which is good, but आपका रिलेशनशिप के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन योर लाइफ, बिकॉज नाउ यू ऑलरेडी वर्किंग, Hmm. तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, वो एंगल से मैं पूछ रहा Okay. हूँ। Basically, I think relationships are important. Each and every kind of relationship is very important. The relation you have with your family members is the most crucial one. या So I have always had a very supportive family, टच। um, very much. So I'm very thankful. Also, the relations at workplace are very important. या If you have a workplace that has a lot of politics and everything, you would not be able to grow, no matter how much you try to put या yourself in efforts you show. It doesn't work. करेक्ट। And talking about personal relations, I think they find working women very intimidating. या या I feel दैट्स वेरी that. ट्रू, दैट्स एक्चुअली ट्रू। And बोलो बोलो, they हाँ। kind of feel inferior. हम्म थोड़ा ज्यादा inferior complex हो जाता है, I feel. हम्म
So in our field, the customer service, the position I am into, they usually hire women for that. Why? Because the customers on the call, they usually tend to listen to the woman more. But Okay. and also if there is some mistake or delay of the cargo arrival or anything, and if a woman is speaking on the call or the mails, the customer who's on the call or mails, they do not tend to get that much angry. So True. that is the psychology of how this works. So it is kind of something I had a thought in the back of my mind sometimes. But I was like, it does not matter to me. I have to work, so as long as I'm getting paid, it's Yeah, very good. Perfect, perfect attitude. does not matter. Yeah. But you're right, that's a very good psychological point कि क्या होता है, and especially Drashti, knowing you, whatever little I know about you, if you are talking to the customer, आपके नेचर में एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यू कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन सामने वाला कैसा है, आप अपना टोन मॉडिफाई कर लोगे, दैट्स व्हाट आई फील, है ना? कि Hmm. अगर सामने वाला थोड़ा डेट शाना टाइप से है, ज्यादा नाटक कर रहा है, तो यू विल बी फर्म ऑन द कॉल। एंड अगर सामने वाला Yeah. मेलो है, थोड़ा नॉर्मल है, जेन्युइन गाय, जेन्युइन पर्सन एट द अदर एंड, Hmm. यू विल ऑल्सो अकॉर्डिंगली एडजस्ट, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट कस्टमर सर्विस, है ना? Yeah. But it's tough, man. It's tough to deal with customers, especially in logistics. Acha, tell me, Indian logistics industry is also booming currently since the last like 5 to 7 years. बहुत चीजें हो रही है. But ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम लोग सुनते थे कि फ्रेट कॉस्ट्स बढ़ गए हैं, ब्लैक सी और वो साइड में बहुत प्रॉब्लम है. आप बता सकते हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन आफ्टर द वॉर? So that effect is still there. That the war and also that Red Sea, it had a lot to do with the shipments that were coming, because and also in between, some pirates had also tried to attack on the या ships, the cargo ships. दोज ईरानियन So ईरानियन basically, ना, ईरान की yes तरफ sir. से प्रॉब्लम हो रहा था, हाँ. तो हाँ, तो काफी प्रॉब्लम्स हुए थे उसके वजह से. तो आप लोग के कॉस्ट बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली उस वजह से. हाउ डू यू टैकल इट, दृष्टि? हाँ, सो आई वाज आस्किंग जस्ट दैट इंटरवेंशन ऑडियंस, डोंट वरी अबाउट इट. आई वाज जस्ट आस्किंग दृष्टि, ये जो ईरानियन पायरेट्स का पॉइंट आप बोल रहे थे, तो आपके फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, किसको प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है? इंडियन एक्सपोर्टर्स को हो रहा है या इम्पोर्ट्स में हो रहा है? कहाँ हमको प्रॉब्लम ज्यादा हुआ? व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दिस वॉर एंड एवरीथिंग? So because the cargo was getting delayed in receiving your at the destination, so the production was hold like for a lot of customers. ओके. So I believe here at the destination the trouble was more. Okay, okay. So I think we were Hmm. on the wrong side always because of the problem. We I were think. on the wrong side. Yeah, because once it has left that place, Yeah, yeah. uh, coming here is the task. Main problem is that और फिर क्या होता है, वो रूट चेंज करके कोई और पैरेलल रूट से निकालो तो कॉस्ट बढ़ जाता है ना. इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग. cost. Yeah, cost also changes. The transit time changes. Also, there are goods that have a certain period only, like some cargo that is dangerous, ओके. hazardous. You cannot keep them for a very long time. It has their chemical reactions. या तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. या केमिकल रिएक्शन और जो कंज्यूमेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, वो तो रख ही नहीं सकते हम्म. बिल्कुल. Yeah. बाप रे. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल. हाँ, मतलब अच्छा लगा कि आप इतना अलग अलग चीजों पे ध्यान रख रहे हो. इट नीड्स सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू हैंडल ऑल दिस, यार. इट्स नॉट टेकन फॉर. सो व्हाट आर योर वर्क टाइमिंग्स एग्जैक्टली? My office starts at 9:30 and ends at 6. एंड सैटरडे सेकंड एंड फोर्थ आपका वर्किंग होगा शायद, No, अज्यूमिंग. just second Saturday is off. Rest of the Saturdays are half day अच्छा, till 2. सेकंड सैटरडे इज ऑफ एंड रेस्ट आर हाफ डे. ओके.
So that's Yes. good, yeah. See, I think people all over India are not very lucky that क्या होता है बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद में job opportunities हैं. So graduates will fight it out and people, smart people like you will end up getting good jobs and you will stay. Problem Hmm. job मिलने में नहीं है. Problem है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना दृष्टि, बहुत कम लोग, there are very few people who stick to a job in tier one Consistency. consistency. Yeah. People want to switch in 6 months, in 1 year. That is Hmm. correct. Na? So anything you would like to share with your juniors कि कैसे टिक के रहना है? Um, I have been in this company, which I am into, for Hmm. the past 3 years, like since we had just one laptop in the entire office. Okay. Wow. Yeah. And I had faith in my directors, genuinely, because they themselves they are very young and they are very ambitious अच्छा. and very driven. So I had I wanted mentors like them. So I stick to this company and I've always got good results. It's not that I did not make mistakes. I made huge mistakes. But instead of like yes, they have shouted on me, but at the same time they have not like bombarded that because of you this has happened. But Hmm. instead they've sat with me and told me that okay, we can get a solution like this. Hmm. So Uh, yeah, I think some people nowadays, if they get grilled by their bosses, they want to like, नहीं नहीं भाई resign करना हाँ, है, ego नहीं ego hurt हो जाता है. By God, you're ego. right. हाँ, Hmm. I feel you are in a learning phase. Learn your shit and then go. I mean, yeah, because that is going to help you a lot. Yeah. Following your pride, doing your work, and then leave. Oh, You'll have my your own respect of your own self. touch wood, बाबा. पता नहीं आप, I'm that is great upbringing. I must compliment your parents if they are watching this when this video Thank releases. you. This is great upbringing. Hmm. बाबा आप touchwood इतने sorted कैसे हो life में यार? How come you are so sorted so So, early? so because I've been working for the past 5 years, I had my first job when I was having my 10th vacation, 10th standards अरे vacation. वाह, वाह. That is so you started So very, I yeah. very young. Acha, tell me, because we have spoken about your company, you want to take the name, it will be good because we have like Yeah, it's yes, yes, yes. 11,500 सब्सक्राइबर्स. तो Okay. अच्छा रहेगा Hmm. अगर आप अपनी कंपनी का नाम बताओ एंड Hmm. वेयर इज इट बेस्ड एंड ऑल, कहाँ कहाँ ऑफिसेज I, हैं. hmm. Yeah. My company's name is Unifier Console Service Private Limited, Okay. and our main branch is in Mumbai. And we also have branches in Delhi, Ahmedabad, अच्छा. and Delhi, Ahmedabad. Yeah. Mumbai, Delhi, Ahmedabad, and you're into logistics management, and it's a startup. How old is the company? Like 6, 7 years? Three. 3 years old. Okay, yeah. Wow. Early stage startup है. You But we guys, have a very good name. yeah. You guys are We are funded? very big Funding competitors to others. I'm sure. Funding क्या level पे है आपकी? I mean, you have, I'm sure you guys look funded. Funded है या bootstrapped है आपका? Hmm. So funded, I don't know. I felt I shouldn't be the one asking all these questions to them, but Superb. I think it is. Yeah, Yeah. I have no clue, honestly. No worries, no worries. But I'm your mentors, your people. I can see they have got the right employee and you have got the right mentors and CEO because आप दोनों fitment आपका अच्छा हो गया, job fitment जो हम लोग बोलते हैं. But Drashti, I'm Mm-hmm. telling you something. Everybody is not, सबका थॉट प्रोसेस आपकी तरह नहीं है. यही प्रॉब्लम है. सी बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स. जो आपने पॉइंट बोला ना दैट आई शुड डिलीट माय जीपे, आई थिंक ये हमारे वीडियो का हाईलाइट होना चाहिए बिकॉज पीपल डोंट रियलाइज क्या होता है जब आप किसी को Hmm. 5,000 रुपया कैश देते हो ना, आपको वो चुभता है अंदर कि यार रोकड़ा चला गया पैसा, रोकड़ा रोकड़ा. रोकड़े की वैल्यू आज Hmm. भी है, चाहे नोशनल वैल्यू है, बट व्हेन यू ट्रांसफर Hmm. इवन लेट्स से 8-9 हज़ार रुपये भी आप जीपे करो या जो भी करो यूपीआई से, वो लगेगा आपको Doesn't पैसा matter. गया लेकिन वो चुभता नहीं है अंदर. इट डजंट पिंच यू. एम आई राइट? व्हाट? Correct.
यू थिंक? Yes, absolutely. तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स आर गेटिंग इनटू दिस विशियस ट्रैप ऑफ, हमारा इंडिया का सेविंग रेट जो एक जमाने में बहुत हाई था, वो लो होता जा रहा है, विच विल हैपन एज द कंट्री ग्रोज एंड इकोनॉमी जैसे बढ़ती है वो होता है, सेविंग रेट गिरता है। लेकिन Hmm. क्रेडिट कार्ड स्पेंड में हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड ऑल थ्रू द लास्ट 40-50 years। इन द यूएस, एन एवरेज यूएस Hmm. सिटीजन हैज 5 credit cards। they pay What? one credit card, yeah, they pay from one credit card to the other credit card। समझे आप? 45-45 days का वो। एंड यही मैं कह रहा हूँ, उनका डॉलर इज द रिजर्व करेंसी, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर मेरे पास डॉलर Hmm. छापने की मशीन है, मैं क्रेडिट पे माल लेता जा रहा हूँ, मुझे ही डॉलर छापने हैं, तो मैं कितना भी क्रेडिट ले लूंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया भर रही है मेरे लिए। Correct. राइट? सो Hmm. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आपके लॉजिस्टिक्स फील्ड में भी आई एम श्योर नाउ सऊदी हैज जस्ट अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू stop using US dollar for oil and other जो Hmm. Yes. तो अब ब्रिक्स कंट्रीज एक पैरेलल करेंसी लाने की बात हो रही है, जिससे शायद डॉलर पे प्रेशर आएगा, एंड आई एम श्योर द फ्यूचर फॉर योर इंडस्ट्री इज लुकिंग वेरी ब्राइट, दृष्टि। आई थिंक आपके Yeah. सेक्टर में कॉस्ट बचेंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, यू विल हैव मोर प्रॉफिट, मोर पर्क्स फॉर द एम्प्लॉयज, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जितना मैंने इस सेक्टर को एनालाइज किया है, तो अच्छे दिन आपके सेक्टर के लिए दिख रहे हैं मुझे आते हुए इन द कमिंग ईयर्स। जितना डॉलर थोड़ा बहुत नीचे Hmm. गिरे हिट होगा, उतना अपने को रुपी को बेनिफिट है। बट Correct. द लार्जर ट्रेंड वाज कि यार अपने, क्या बोलते हैं, our people are falling for the wrong things, and they are spending money on credit, not on assets but on liabilities। वो मेरा कंसर्न। जैसे क्रेडिट कार्ड में हम लोग Hmm. अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज पे खर्चा करेंगे जो एसेट नहीं है, वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, जैसे गाड़ी, या आई जस्ट Hmm. हर्ड somebody had a credit limit of 10 lakh rupees। वो थोड़ा बिग शॉट टाइप का कोई है, उसके पास एक बड़ा क्रेडिट कार्ड था, उसकी क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपए की, उसने 32 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, कोई सेकेंड हैंड मर्सिडीज, और 32 में से दस Okay. लाख रुपए उसने क्रेडिट कार्ड से भरे। तो अ कार इज अ लाइबिलिटी, इट्स नॉट एन एसेट, है ना? Correct. तो उस, Depreciates. या प्लस क्रेडिट स्पेंड बढ़ना और लाइबिलिटी जमा होना, I think people like you who are role models, youngsters, if you're watching this, you should realize जो वो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है, that you can use UPI, you can use credit card, but आपके मन में एक एक वो बोलते हैं ना हम लोग, बही खाता होना चाहिए अपने फोन में, अकाउंट्स, कि यार ये Hmm. क्रॉस नहीं करना है, ये थ्रेशोल्ड अपने को मेंटेन करना है। उससे अच्छा हम पैसा, लाइक यू आर डूइंग म्यूचुअल फंड, एसआईपी, हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ, पैसा ग्रो करेगा अपने आप, बराबर ना? Yeah. ओके, वन मोर थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर investments, and then we'll wind up in 5 minutes. I hope you're not getting bored, huh, Drashti? No, no. No, sir, not at all. Your company's name again? Console Services Private Limited. Unifier Control Services Private Limited. Console. Unifier Console Services Private Limited. So anybody watching, uh, this is a company. It's a startup. It's an Indian company. I'm sure they belong in MSME sector. I'll try and get the company heads if possible. I'll try and meet them because it looks like a very good business, and it goods my mentee Drashti is there, so मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अच्छे से यहाँ जम गई है। So it's a very proud feeling for people like us that you are working in a good company for the last 3 years। जो पहला थ्रेशोल्ड होता है ना जॉब का, राष्ट्रीय, वो पहले 3 साल ही मुश्किल होते हैं, उसके बाद निकल जाता है, उसके बाद आप सीनियर It's एम्प्लॉय, easy. हाँ, कैटेगरी में आ गए, स्पेशली इन अ स्टार्टअप। हैव यू हर्ड ऑफ डॉग ईयर्स? I've heard, like, I've had a हाँ, small blink of idea of it. या I've इट्स, already, I'm already a senior position at a senior position I here know, right I know. now. I can imagine that, because 1 year of working for a normal established company versus 1 year, if you work in a startup for 1 year, you have worked in a normal company for 7 years. So it's called as dog years। Oh, ऐसा उतना okay. इक्विवेलेंट, क्योंकि स्टार्टअप में यही होता है ना, चीजें इतनी फास्ट पेस पे चलती है दैट एम्प्लॉइज गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, है ना? इसलिए तो आप इतने Correct. सॉर्टेड हो गए ना जल्दी। मुझे बार बार वही अच्छा लग रहा है Hmm. कि और लोग सुनेंगे आपके उम्र के, तो दे विल गेट बेनिफिट।
एंड गाइस, अगर आप ये देख रहे हो यूपीएससी, अगर आप क्रैक नहीं कर पाए, नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, you can start podcasts on YouTube, you can do reels on Instagram, आपके पास फ्री का डेटा है, कुछ ना कुछ करके आप अपना एक, ये जैसे इन मुंबई, अब हर कोई तो मुंबई में नहीं आएगा, बट इन मुंबई हम लोग देखते हैं गाइस कि एक वड़ा पाव वाला भी महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया आराम से कमाता है, अब कहीं भी जाके वड़ा पाव बेचो, है ना? तो पैसा कमाना इज correct. नॉट प्रॉब्लम, बट आपको कहाँ क्या मिलता है, जैसे दृष्टि ने बताया कि शी टुक अ चांस, शी वांटेड टू डू एमबीए बट शी डिड नॉट लाइक इट, है ना दृष्टि, बराबर ना? एंड आपने डिसाइड किया कि आई विल कंटिन्यू विथ माय जॉब और मैं इसी में ग्रो करूंगी, एंड सी यू फाउंड द राइट कंपनी फिट फॉर योरसेल्फ। Correct. सो सो वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसा होता है कि 100 - योर एज, 100 - योर एज, उतना परसेंटेज आपका इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए इन्वेस्टेड, है ना? तो Okay. या सो लुकिंग एट योर रिएक्शन, आई नो, डोंट वरी, आई एम श्योर इतना अभी आपका एसआईपी नहीं हो रहा है, बट ये Hmm. एक थंब रूल है कि जितना, सपोज किसी का एज है 25, सपोज समबडी इज 25, सो 100 - 25, Hmm. 75% ऑफ हिज करंट डिस्पोजेबल इनकम, जितना आप जल्दी म्यूचुअल फंड शुरू करोगे या एसआईपी करोगे, उतना ज्यादा जल्दी आप अमीर यानी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, दैट इज द लॉजिक। तो Oh. अभी आपका जितना भी है मंथली, आई एम श्योर इट्स नॉट 70 - 75% ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम, है ना? कम ही होगा, Hmm. बट वही मैं कह रहा हूँ, Exactly. वो पैसा स्पेंड करने के बजाय अगर वो एसआईपी में निवेश होता रहेगा तो वो जल्दी आपको वेल्थ कमा के देगा, इवन स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर अ लॉट मंथली बेसिस पे। Hmm. व्हाट इज योर एंड गोल, मुझे लास्ट में सिर्फ ये पूछना है, वेल्थ मैनेजमेंट में कितना पैसा देख के आपको लगेगा कि यार अब मुझे जॉब नहीं करना है, मतलब पैसे कमा लिए, यू विल वर्क फॉर योर Hmm. लाइफ टाइम, आई अंडरस्टैंड, हम लोग क्या है, काम धंधे वाले लोग हैं, हम लोग बिना काम के रह भी नहीं पाएंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन एज आप अपना खुद का कंसल्टिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड बन के। सो Hmm. 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, व्हाट इज योर वेल्थ गोल? हर इंसान का एक वेल्थ गोल होना चाहिए कि इतने पैसे आ गए ना, मतलब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, अब मैं जो भी करूंगा अब मर्जी का करूंगा, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा तो कमाएंगे बट काम अपनी मर्जी का करेंगे। Hmm. व्हाट इज दैट नंबर इन योर माइंड, डू यू हैव अ नंबर लाइक दैट? Not particularly, but yeah, I mean, I would be really happy if I had 5-6 crores with me, so I would be sorted. वेरी गुड, वेरी गुड। सो लास्ट टिप दे, 5 6 करोड़ इज अ गुड एंड अचीवेबल गोल, इट इज अचीवेबल बाय द वे। Yeah, तो I हाँ। wouldn't say 10-15 crores and then, oh my God. नहीं नहीं, गॉड विलिंग यू विल रीच देयर वेरी सून। राष्ट्री, गुड टू टॉक टू यू, आई थिंक वील वाइंड अप दिस इंटरव्यू, काफी टाइम हो गया, बट थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, एंड इट Thank वाज you. रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू राष्ट्री। Thank you so थैंक यू सो मच, जस्ट गिव मी अ मिनट। I wish you grow well from your current company, and बहुत जल्द आपका वो 5 करोड़ का गोल सक्सेसफुल हो जाए, थोड़ा टाइम भी लगेगा तो चलेगा, बट सिंस यू आर वेरी much. सॉर्टेड मेंटली, क्योंकि क्या है, पैसा पहले यहाँ बनता है फिर वो रियलिटी में बनता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलता है कि आपको पहले यहाँ सॉर्टेड Hmm. होना चाहिए। सो यंगस्टर्स, इफ यू आर वाचिंग, आई होप आपको काफी इंस्पिरेशन मिला होगा, इवन इफ people watching are parents, at least your kids can benefit from this. So thanks again, Drashti. I'll see you next time. God bless. Thank you, sir.